Now coming to the inverse of a square matrix, which is the important part of this. Inverse of a square matrix. Okay. Let A be a square matrix of order n. If there exists a square matrix of B, if A is a square matrix of order n, 2 or 3, if there exists a square matrix of B such that AB and BA, the product AB and BA will be identity matrix. Then if the product of AB is you are getting identity, that means the inverse of A is B and inverse of B will be A. Okay, suppose A is given to us, we want to find A inverse. So the question comes, find the inverse of 2513 by using elementary operation if exists. Okay, let A is 2513, which is given. Let us take this as a matrix, given matrix, and any matrix can be written as a product of identity matrix and the same matrix, then product of identity and same. So 2513 1001, this is the identity matrix, this is the identity matrix, and this is A. Then by row 1 I want to change. You see, now the purpose is, this is the given matrix, you want to find the inverse of this, and you have written is identity matrix multiplied by the given. So now identity you have written 1001 and this is the given matrix. The purpose is now let us change this into identity matrix by operating. इसको हम I बना देंगे. So I बनाते बनाते ये बदलते जाएगा. That means इनका जो प्रोडक्ट होगा वो I हो जाएगा. That means एक दूसरे का इनवर्स बनेंगे. That is the purpose. So इसको अगर हम I बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1. 1 0 0 1 I want to make. How? से कोई भी प्रोसीजर आप कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं. someone will take 3 to 4 steps, someone will take 5 to 6 steps, somebody will can do it within 2 steps. So there is no any prescribed number of steps, but the procedure that once you started with row wise, complete it with row wise. If you started with column wise, then complete it with column wise operations only. Say for example, I want to change this into identity matrix. As a result, consequently, this will also go on changing. Then the product will be identity. So this one, whatever it will form, that will be resulted as a inverse of A. First thing, if I see, this is given 2513. हमें चाहिए यहाँ पे 1, यहाँ 0 0 1. किसी एक को पकड़ के चलते हैं, यहाँ 1 चाहिए मुझे. उसके लिए I can make it 2 minus 1 और I can interchange. As अभी हमने पढ़ा है कि rows can be interchanged. So हम interchange कर दिया. Row 1 is interchanged with row 2. So I got 1 3 2 5. रो 1 यहाँ पे भी जो ऑपरेशन आप इस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साथ करना होगा. सो रो 1 इज चेंज्ड विथ रो 2. सो हियर व्हाट आई विल डू गेट, आई विल गेट 0 1 बिकॉज रो 2 विल बिकम रो 1 एंड रो 1 विल बिकम रो 2. ये हमने चेंज कर दिया. नाउ व्हाट एल्स आई विल गेट, एक हमें मिल गया यहाँ पे 1, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए होगा, यहाँ पे 0 चाहिए होगा. ओके, सो फॉर दैट पर्पस मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आएगा, देन सबट्रैक्ट कर दूंगा. सो व्हाट आई विल राइट द ऑपरेशन, आई विल गेट रो 2 2 रो 1 माइनस रो 2, 2 रो 1 माइनस रो 2 रो 1 माइनस रो 2 करेगा तो यहाँ 0 मिलेंगे मुझे. सो रो 1 इज नॉट चेंजिंग, आई विल राइट रो 1 एज इट इज. रो 1 आई एम नॉट चेंजिंग. इस तरफ भी मैं रो 1 चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं रो 1 का पूरा लिख दिया दोनों तरफ. रो 2 मैं बदल रहा हूं, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस रो 2, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस रो 2 आई विल गेट 0. ट्वाइस ऑफ रो 2, ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस रो 2, ट्वाइस ऑफ रो 1 minus row 2, 6 minus 5, I will get here 1. Similarly, here I will change the same operation.
twice of row 1 minus row 2, twice of row 1, okay, twice of row 1 minus row 2. I'll get this. Twice of row 1 minus row 2, twice of row 1 minus row 2. I'll get this. Right? हमें बहुत कुछ चीज मिल गया. ये 1 चाहिए था, मिल गया. यहाँ 0 चाहिए था, यहाँ क्योंकि 1 0 0 1 हमें 3 एलिमेंट तो मिल गए. बस इसका बारी अब सिर्फ इसको बदल देने से हमारा काम हो जाएगा. यहाँ क्या चाहिए? यहाँ 0 चाहिए. फॉर दैट पर्पज व्हाट आई विल डू, रो 1 minus thrice of row 2, row 1 minus thrice of row 2. So row 1 minus thrice of row 2 I will make. Row 1 is changing. So row 1 minus thrice of row 2. 1 minus 3 into 0, 1. Row 1 minus thrice of 0. Row 2 is not changing. So row 1 minus thrice of row 2. 0 minus 3 into minus 1. 3. Row 1 minus thrice of row 2. 1 minus 3 into 6. 6. 1 minus 3 into 2. 6. So minus 5. Row 2 is not changing. See now, this is the identity matrix. This is a matrix which we obtained multiplied by A. That means obviously this is A inverse because I equal to A inverse into A. Therefore, A inverse 3 minus 5 minus 1 and 2. This is the inverse of A. Now, what I can suggest you, just for verify, you multiply A, the given matrix. A is the given matrix, that is 2, 5, 1, 3, and inverse जो आपको मिला है अभी, that is 3 minus 5 minus 1 and 2. Find the product whether you are getting identity. Then each one will be inverse of that. A inverse is that. So this is for your verification. You verify and try to do this. So the same question I would like to assign you by column operations. Okay? Thank you. Happy learning.